Good evening all. As confirmed already by Mr. More, I hope you all are able to listen our voice as well as you people are able to see my screen. I welcome you all for this free webinar organized by Spider Software Private Limited and giving me an opportunity to share my experience on intraday trading by some limited technical tools and by simplifying the strategy. I welcome you all for free technical analysis awareness session on intraday trading using VWAP ATR and pivots. As already confirmed by Mr. More, that VWAP is a benchmark tool used by different technical traders as well as by big institutions. Before I move further, would like to know, are you people okay with English or should I combine both Hindi and English? People are saying Hindi and English, please. All right, thank you. शुक्रिया. ठीक है, अभी तक हम लोगों ने कुछ ज्यादा डिस्कशन नहीं किया है, अभी हम लोग बेसिक्स चालू कर रहे हैं. अच्छा हुआ हम लोगों ने कंफर्म कर लिया कि हिंदी इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन रखना है. वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, अगर मैं एक डेफिनेशन लूं जो एक फाइनेंशियल पोर्टल है investopedia.com, वो लोग ये बोलते हैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस इज अ ट्रेडिंग बेंचमार्क यूज्ड स्पेशली इन द पेंशन प्लान्स. VWAP is calculated by adding up the dollars traded for every transaction, price multiplied by the number of shares and then dividing by the total number of shares for the day. इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो वेटेड एवरेज प्राइस हम लोग बोल सकते हैं. इट इज यूज्ड फॉर अ इंट्राडे ट्रेडिंग मोस्टली. 90% ट्रेडर्स इसको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही यूज करते हैं. बाकी के जो लोग यूज करते हैं वो लोग कुछ पोजिशनल सेटअप के लिए VWAP का इस्तेमाल करते हैं. VWAP is basically used for an intraday trading by 90% of the traders. Rest it can be used for a positional trading as well depending upon your risk profile. आइडियली हम लोग जो यूज करेंगे वो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यूज करेंगे. वी आर गोइंग टू यूज दिस टूल ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. फर्दर प्लीज मेक अ नोट, हम लोग यहाँ पर कैंडल का कलर एज वेल एज साइज को देखकर ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे. वी आर गोइंग टू ट्रेड on this strategy or on this tool or indicator based on candle color as well with size. Maximum time this indicator gives you a good move or good indication in the first 90 minutes only. I generally prefer using this indicator for first 90 minutes. Afterwards, frankly speaking, I don't consider this tool for a larger part of the rest of the trading day, except I get some another way signal. All right. Now true range. We have already discussed VWAP. हमने VWAP ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. अब अगर हम ट्रू रेंज की बात करें तो ट्रू रेंज को अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊं तो सिर्फ इतना मतलब समझना है कि ट्रू रेंज का मतलब हमारा हाई और लो का डिफरेंस. वी ऑल गो फॉर अ शॉपिंग, राइट. हम लोग सब शॉपिंग करने जाते हैं तो वहां पर जो भी दुकानदार या किसी के पास से शॉपकीपर से वो लोग हमें रेंज बोलते हैं. व्हेन वी कम इनटू द स्टॉक मार्केट, हमारा रेंज क्या होता है? हमारा रेंज होता है आज के हाई लो या जो भी कैंडल मैं कंसीडर करता हूं उसका हमारा हाई लो का डिफरेंस. कुछ चेंजेस भी होते हैं इस फॉर्मूला में या इस कंडीशन में, लेकिन इतना ज्यादा हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर दिस कैन बी डिस्काउंटेड. हम लोग इसको आसानी से नेगेट भी कर दें तो भी आसानी से ट्रेड कर सकते हैं. अब होता है एवरेज ट्रू रेंज. एवरेज ट्रू रेंज मींस आई एम टेकिंग अ एवरेज फॉर लास्ट कपल ऑफ सेशंस, राइट, जिससे कि हम लोगों को एक आइडिया लगे
कि हमारा एक्सपेक्टेड कितना मूवमेंट हो सकता है स्टॉक में, राइट। ट्रेंडिंग मूव मिल गया अलग बात है। सितंबर में एक दिन में निफ्टी कुछ 500-600 पॉइंट बढ़ी थी, दैट वाज अ एक्सेप्शन केस, वो आइडियली हर रोज देखने को नहीं मिलता है। बाकी आइडियली निफ्टी हर रोज कितनी घूमती है, करीब 100-125 पॉइंट, बैंक निफ्टी करीब 400 से 500 पॉइंट। सो वो हमें समझना जरूरी होता है कि कितने पॉइंट्स आज एक्सपेक्ट कर सकता हूं मैं मार्केट का मूवमेंट, या सिंपल लॉजिक हाई लो के डिफरेंस को। और एटीआर के थ्रू हमें एक हिंट भी मिल सकता है कि हम लोगों को कहां पर एंट्री करनी चाहिए या कहां पर एंट्री नहीं करनी चाहिए। सेम इज एप्लीकेबल एग्जिट टाइम, कि अब एग्जिट कर लेना चाहिए या फिर हम लोग ट्रेल एसएल कर ले, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। जो डिफॉल्ट सेटिंग होता है एटीआर का, वो 14 डेज का होता है। डिफॉल्ट सेटिंग दैट वी यूज फॉर एटीआर इज 14, but frankly speaking, as I am an intraday trader or as I am going to use this tool for my intraday trading, I'll be considering only 5 days period. मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं तो मैं सिर्फ 5 दिन का ही पीरियड एटीआर टीआर कैलकुलेट करूंगा। क्यों? क्योंकि पिछले 5 दिन के ट्रेंड के हिसाब से मुझे आइडिया मिल जाना चाहिए या मिल जाएगा कि हमारा एक्सपेक्टेड मूव कितना होता है। लास्ट 14 डेज लूंगा तो उसमें जिगजैग ज्यादा हो गया होगा, तो शायद ट्रू पिक्चर रिवील ना भी करे। सो बाय दैट वे हम लोगों को ये देखना है कि मैं छोटा टाइम पीरियड ले रहा हूं, 5 दिन 14 दिन की जगह पर, और इसको मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव अपने ट्रेडिंग में यूज करूंगा। टिल हियर इफ एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी प्लीज लेट मी नो। किसी को कोई क्वेरी है यहां पर, या फिर हम लोग लास्ट में ही क्वेश्चन आंसर मोड रखेंगे? अभी तक तो नहीं, सब ठीक चल रहा है। ऑलराइट, ठीक है, फाइन। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं किस तरह से हम लोग इसको ट्रेडिंग में यूज करेंगे। हमारा जो वेबिनार का जो टॉपिक है उसमें हम लोगों ने वीवेब कहा है, एटीआर कहा है, अब आता है पाइवोट्स। पाइवोट्स फ्रेंकली स्पीकिंग हमें उसका भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, राइट। हमारे पास सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग इजीली सीधी वैल्यूज ही मिल जाएगी, राइट। मैं एक फ्रेश चार्ट ओपन करता हूं, निफ्टी का ही ओपन करता हूं पहले, जिससे हमारा काम इजी हो जाए। जो ना ये हमारा 15 मिनट्स का चार्ट है, इसमें मेरा ऑलरेडी फीड किया हुआ है पाइवोट पॉइंट्स। अगर मैं पाइवोट्स को निकाल भी दूं तो हम लोग सेटिंग्स में जाके, चार्ट सेटिंग्स में जाकर इजीली सपोर्ट एज वेल एज इसमें स्टडी ऐड कर सकते हैं। होल्ड ऑन, आ जाती है, राइट। ये हमारा पाइवोट पॉइंट्स होता है। पाइवोट पॉइंट्स आप अगर डेली टाइम फ्रेम के लिए कंसिडर कर रहे हो तो आपको उसका एक टाइम फ्रेम ऊपर वीकली का डेटा लेना होता है। आज के जो हमारे पाइवोट्स बने हैं वो कल का हमारा जो डेटा बना है, ओपन हाई लो क्लोज, उसके ऊपर से हमारे आज के पाइवोट बनते हैं। पाइवोट पॉइंट जो होता है वो हमारा मिड पॉइंट का आ जाता है। ये मेरा इंट्राडे का निफ्टी का 15 मिनट्स का चार्ट है, जिसमें आपको ऑलरेडी रेडीमेड पाइवोट मिल गए हैं। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारा ओपनिंग जो हुआ था वो पाइवोट के ऊपर ही हुआ था, राइट। आई होप यू ऑल नो बेसिक कैंडल्स, कैंडल फॉर्मेशन ग्रीन रेड कैसे बनता है, सो वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट पार्ट। पहली कैंडल, फर्स्ट कैंडल ही अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो फर्स्ट कैंडल का अगर मैं यहां पर रेंज निकालने जाऊं
तो फर्स्ट कैंडल का रेंज हमारा निकलता है हाई लो का डिफरेंस। आप लोगों को यहाँ पे राइट हैंड साइड पर वैल्यूज देखने को मिलेगी OHLC, दैट इज माय हाई लो एंड ओपन, हाई लो एंड क्लोज। तो हाई लो का अगर आप डिफरेंस यहाँ पर निकालने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी समथिंग लाइक 43 पॉइंट्स, राइट। 43 पॉइंट्स मेरी फर्स्ट कैंडल है, लेकिन मुझे आज एक्सपेक्टेड मूव कितना मिलना चाहिए था या कितना मिलेगा वो जानना हमारे लिए जरूरी होता है। तो उसके लिए हमेशा हम लोग डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यूज करेंगे। डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में हम लोगों को ATR करके जो इंडिकेटर हमने अभी डिस्कस किया वो हम लोग लगाएंगे। वो मेरा डिफॉल्ट 5 पॉइंट्स का ही है, ठीक है, 5 डेज का ही है। सो वहां पर हमें कोई कैलकुलेशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो एज पर दिस यस्टरडे, आई रिपीट, एज पर दिस यस्टरडे, हम लोग अगर यहाँ पर चेक करें, आपको यहाँ पर देखिए वैल्यू मिल रही है 105, राइट, या 106 राउंड ऑफ करें तो 106, 106 पॉइंट का मूवमेंट मैं रफ एक्सपेक्ट कर सकता हूं आज के दिन में, राइट। ये हमारा बेसिक कैलकुलेशन होता है, ये हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ले सकते हैं। अब इसमें हमें करना क्या होता है, जैसे ही हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग में आएंगे हमारा ATR की वैल्यू चेंज हो जाती है। हमें जरूरत भी नहीं है, क्यों? क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर चुके हैं कि हमारा निफ्टी का मूवमेंट आज करीब 110 पॉइंट्स का रहेगा। We are going to check ATR on a daily time frame, and as seen before, our ATR for this particular asset or underlying asset for after yesterday's session was something 106 points. So we can expect about a movement of 106 points today. आज हमारा एक्सपेक्टेशन 106 पॉइंट का था, लेकिन दिक्कत कहां हुई? वेयर द प्रॉब्लम हैपेंड? निफ्टी इन द फर्स्ट 15 मिनट्स ओनली 43 पॉइंट्स घूम गया। अच्छी बात है, फर्स्ट 15 मिनट्स निफ्टी मूव्ड मोर देन 40% ऑफ माई एक्सपेक्टेड मूवमेंट। मेरा एक्सपेक्टेशन था 106 पॉइंट का, 43 पॉइंट्स अगर निफ्टी घूम गई है देन लॉजिकली मैं उसमें ट्रेड नहीं करूंगा, एक्सेप्ट आई गेट सम सपोर्ट पार्ट। अगर मुझे कुछ सपोर्ट पार्ट दिखता है और उसके हिसाब से मैं ट्रेड करता हूं देन इट्स अ डिफरेंट थिंग, एल्स आई विल नॉट गो टू ट्रेड इन दिस। देन आफ्टर यहां पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि R1 यानी कि रेजिस्टेंस लिया हुआ है, तो फिर हमें यहां पर ट्रेडिंग करने की जल्दबाजी नहीं करनी है। आई रिपीट, हम लोगों को यहां पर R1 पर अगर रेजिस्टेंस दिख रहा है और ये जो ग्रीन लाइन है वो हमारा प्रीवियस डे का हाई है, विच वी कैन सी, ये कल का हाई है, ये आज का हाई यहां पर बना था फर्स्ट 15 मिनट्स का। कल का हाई कल अक्खे दिन में नहीं टूटा था, यानी कि क्रॉस नहीं हुआ था, तो आज भी मुझे संभल कर ट्रेडिंग करना चाहिए। अग्रेसिव बाय 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 यानी कि लॉन्ग साइड ट्रेड नहीं करना है। We can see that in the first 15 minutes yesterday, Nifty did not cleared high of first 15 minutes for the throughout the day. So today also I will be bit cautious to go on the long side. ठीक है, तो यहां पर हम लोग लॉन्ग नहीं कर सकते थे। अब यहां पर विदाउट इवन यूजिंग अवर VWAP इंडिकेटर, बिकॉज स्पॉट में VWAP आइडियली कोई चेक नहीं करता है, बट वी कैन चेक इट विथ अवर सॉफ्टवेयर। As of now I am not feeding that part as well, but you can see that spot is taking a support, near to my pivot point, it has taken a support for near 1 hour time। 1 घंटे तक निफ्टी करीब 12060 के आसपास ही सपोर्ट लेती रही, and then after you can see that a big movement came in at the end। सो आप सिंपल बेसिक पाइवोट का यूज करके भी ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी स्पॉट में डायरेक्टली हम ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग एज अ मोमेंट फ्यूचर का चार्ट भी देख सकते हैं। दिस इज माय फ्यूचर चार्ट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस चार्ट हाउ आवर VWAP or tick average is reflected। Yes, we can see that though I repeat, though my VWAP or my prices were on the downside,
लेकिन यहाँ पर ये बड़ी कैंडल के बाद मैं देख सकता हूं कि वीवैप का सपोर्ट, सॉरी पाइवोट का सपोर्ट हमारा अंडरलाइन ले रहा है, निफ्टी फ्यूचर ले रहा है। इफ आई वांट टू टेक अ ट्रेड, आई कैन टेक अ ट्रेड। मैं आपको एग्जांपल के साथ नहीं बताऊंगा, बट प्रैक्टिकली आज निफ्टी में ट्रेडिंग बिट डिफिकल्ट थी, इसलिए जस्ट एक एग्जांपल ही आप लोगों को मैंने बताया है। ठीक है, अब आज के जो हमारे एग्जांपल्स जो थे, कुछ बढ़िया ट्रेड्स जो बन रहे थे, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो स्टॉक लेंगे वो है, लास्ट में मार्केट क्लोज होते होते भी एक स्टॉक हाई बना रहा था, वो था पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक, दैट इज एसबीआई। व्हाट आई ट्राई टू डू, हम लोग डेली चार्ट में, आई रिपीट डेली चार्ट में हम लोग सबसे पहले एसबीआई का एटीआर चेक करेंगे। कितना है? अप्रोक्सीमेट 7 points. As per my yesterday's data, I am able to see that SBI is having a true range, that is average true range, I am sorry, for 7 points. And today I can expect a movement of about 7 points today. Then what I have to do? I have to go for a intraday chart. Intraday chart I am going to check. We are not going to consider this indicator ATR as a whole. So what I am trying to do is I will be removing the same. Right. Now here we can see that we opened, or our underlying asset, that is SBI, opened near to my pivot and closed with some loss from the pivot point. हमारी फर्स्ट कैंडल रेड थी, एंड देन आफ्टर हम लोग देख सकते हैं कि कुछ डाउन साइड का मूव आया। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, ये कैंडल को अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो पहली कैंडल रेड है, फर्स्ट कैंडल इज रेड। आफ्टर दैट फॉलो अप इफ आई ट्राई टू सी, डोजी कैंडल थी। डोजी मतलब वीक कैंडल थी। बुल्स एंड बियर्स आर हैविंग अ गुड फाइट इन बिटवीन देम, एंड इट हैज रिजल्टेड इनटू अ डोजी कैंडल। फर्स्ट 15 मिनट्स के लो के बाद एक और लो बना नेक्स्ट 15 मिनट्स में, लेकिन कुछ कन्विंसिंग सेल ऑफ नहीं आया। दूसरी बात, कल का लो भी अभी तक प्रोटेक्टेड था। वी कैन सी दैट फर्स्ट 15 मिनट्स लो वाज ब्रोकन, बट दैट वाज स्टिल फार, sorry, first 15 minutes low was broken, but still in the next candle low was made, but it was a dozy candle, so I will not take a trade. Why? Because my previous day low is also protected, and in this case once I am closing above VWAP, I will be entering on the buy side. हमने आज जो लो बनाया है वो कल के लो से ऊपर था, और जैसे ही वीवैप की प्राइस, सॉरी हमारी प्राइस वीवैप के ऊपर अगर क्लोज होती है, हम लोग बाइंग साइड ट्रेड ले सकते हैं। आप अगर चाहो तो इधर भी ट्रेड ले सकते हो जहां पर मैं क्लिक कर रहा हूं, या फिर यहां पर भी ट्रेड हो सकता है। यहाँ का हमारा ट्रेड कितना है? 337.85, 337.85 हमारा स्टॉप लॉस होगा ये कैंडल के नीचे, जो कि वीवैप के पास में ही है। सो करीब 2 पॉइंट का आपको स्टॉप लॉस लेना है। इमीडिएट बेसिस आपको यहां पर फर्स्ट R1 पर चाहो तो प्रॉफिट बुक कर सकते हो। यहां पर रिस्क रिवॉर्ड एग्जैक्टली मैच नहीं होता, लेकिन हर एक बार मैच करना एक डिसिप्लिन ट्रेडर को फायदेमंद रहता है। हम लोग अगर यहां पर भी ट्रेड लेकर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखते हैं, तो एंड में देखो अक्खे दिन बाद में पाइवोट के ऊपर ही हमारा कैंडल्स रह रहा है, और वीवैप को भी मोस्ट टाइम रिस्पेक्ट किया है, और एंड में आपको अच्छा बाय मिल गया है। मैं यहां पर वीवैप के बेस पर ट्रेड नहीं लूंगा। व्हाई? बिकॉज बाय एंड वीवैप शायद आपको ट्रैप कर सकता है। ऑल राइट, दूसरा अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आज इस स्टॉक में हुआ था। यहां पर अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो पाइवोट के ऊपर ही हम लोग खुले हैं, सिर्फ पाइवोट के नीचे एक फ्लैश बनाया, कोई बात नहीं। पाइवोट के नीचे एक फ्लैश हुआ, प्रीवियस डे का लो भी रिस्पेक्ट किया, एंड देन आफ्टर वीवैप के बेस पर इट हैज मेड अ न्यू हाइज, राइट। अगर हम लोग इसको डेली पॉइंट चार्ट पर देखते,
एक्सपेक्टेड मूवमेंट हमारा 21-22 पॉइंट्स के आसपास का था। इफ आई वुड हैव टेकन अ ट्रेड ओवर हियर, अगर मैं यहां पर ट्रेड लेता, हाई लो का डिफरेंस हमारा 11 पॉइंट्स हो जा रहा था, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये प्रीवियस हाई के ऊपर यानी कल के हाई के ऊपर भी यहां पर चल रहा है, तो आपको एक्सटेंडेड मूव देखने को मिलेगा। if your previous day high is also getting cleared with good volumes, good candles, then ideally you will be able to see your ATR is getting completed and your move may continue for some more time. जब भी आपको प्रीवियस डे का हाई क्लियर देखने को मिले और भले ही आपका एटीआर कंप्लीट हो गया हो, लेकिन अगर कैंडल साइज अच्छी है और आपको वॉल्यूम के साथ में वो मूव देखने को मिलता है, तो वो आपका जो मूव होता है वो ट्रेंडिंग रहता है, तब एटीआर का आपका बेस रहेगा, लेकिन आप एक्सटेंडेड ट्रेड भी ले सकते हो। इन दैट केस आपको आपका जो R3 R4 वहां तक के टारगेट्स भी मिल सकते हैं, वो फिर आप आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ट्रेल स्टॉप लॉस करते रह सकते हैं। मैं अगर इस केस में ट्रेड लेता तो अज्यूम कीजिए अगर मैंने यहां पर भी ट्रेड लिया है या इस कैंडल पर भी अगर मैं ट्रेड लेता हूं, तो मेरा 1500 का बाई मैं अज्यूम कर रहा हूं, 5 पॉइंट का ही मैं स्टॉप लॉस लेता। 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस क्यों लिया है? बिकॉज माई VWAP वैल्यू इज 1495 and then after I can see that a high made here was 1517, 5 points risk and approximate 17 points I could have gained, but if at all हम लोग हाई पर भी बुक नहीं कर सकते, तो मैं क्लोजिंग पर भी अगर ये बुक कर रहा हूं क्योंकि ये डोजी कैंडल है एंड इट इज अ काइंड ऑफ अ शूटिंग स्टार, तो यहां पर भी मेरे को करीब करीब 13 पॉइंट्स मिलते थे। ऑल राइट, ये आज का एग्जाम्पल था। ये कल वाले में भी आप ट्रेड ले सकते थे, ओपन एंड लो हमारा सेम था इसके बेस पर, राइट। कल का बाइवोट हमें नहीं मिलेगा, इसलिए इट मेक्स नो सेंस मच टू डिस्कस सेम स्टॉक अगेन एंड अगेन। मैं दूसरा स्टॉक अगर आपको बताऊं इसमें, ये वाला देखिए, यहां पर भी पाइवोट के ऊपर खुला है और एक्सटेंड हुआ है। कैसे? ये मेरी प्रीवियस डे की हाई की लाइन है। इफ माय प्रीवियस डे हाई लाइन इज गेटिंग क्लियर्ड, आई विल इग्नोर माय ATR TR concept and I will enjoy the move, right? Once any red candle comes into the picture, I can take an exit. All right, this is my yesterday's example. See, yesterday's high was near to my previous day's, sorry, yesterday's open was my previous day's high, almost or roundabout, right? In such a case, I can take a trade on a short side. जब भी आपका प्रीवियस डे का हाई और आज का फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई या फिर उस कैंडल का क्लोजिंग अगर नजदीक मिलता है, VWAP नेगेटिव है, आप शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हो। अनदर ट्रेड दैट यू कैन टेक ओवर हियर इज, यहां पर एक्सट्रीम केस में एक्सेप्शन हो सकता था, मैं इधर भी ट्रेड ले सकता था। हाउ? बिकॉज VWAP एक्टेड एज माई रेजिस्टेंस। I repeat, VWAP acted as my resistance. So even if I am taking a trade over here on this red candle, I can keep minimum stop loss, and with proper discipline, I can gain easily 1:2, 1:3 risk reward as the case may be, right? Why I am going short? Because I am able to see a good red candle. I repeat, a good red candle. What kind of a candle it is? It is kind of a dark cloud cover. तो यहां पर भी मैं शॉर्ट कर सकता हूं। VWAP एज अ रेजिस्टेंस काम किया है, तो यहां पर हमारा शॉर्ट 458 पर होगा। स्टॉप लॉस क्या होगा? VWAP के ऊपर। यहां पर हमारा VWAP की वैल्यू है 459.62। आप चाहो तो 460.20 पैसा, 50 पैसे के आसपास ऊपर रख सकते हो, एंड देन यू कैन एंटर इनटू अ शॉर्ट साइड ट्रेड। इज दिस क्लियर टू ऑल? यहां तक किसी को कोई क्वेरी? एनीवन वुड लाइक टू गिव देयर चॉइस ऑफ स्टॉक्स?
मिस्टर अभिषेक पुरोहित का क्वेश्चन है सर, व्हाट इज वैल्यू ऑफ वीवैप? Where in this example? यस। All right, here in this example we can see, let me make it bit smaller. Yes, here my value of VWAP is 459.62 and my candle closing was 458 rupees. Same thing was happening over here as well, but here no candle signal was visible. जैसे यहाँ पर हमें डार्क क्लाउड कवर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर या ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। वीवैप आइडियली आपको फर्स्ट 90 मिनट्स तक यूज करनी है, उसके बाद में अगर एज अ रेजिस्टेंस मिल जाता है तो आप ट्रेड ले सकते हो या फिर अवॉइड कीजिए। एक जन पूछ रहे हैं कि वीवैप एंड टी एवरेज सेम है क्या? नहीं, दोनों अलग चीज होती है। व्हाट वीवैप इज योर नंबर ऑफ शेयर्स एंड प्राइस ट्रेडेड, और जो हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं वो टिक एवरेज है। जो टिक एवरेज की बात कर रहे हो, देन यस, टिक एवरेज एंड वीवैप इज सेम इन दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं सेशन के साथ, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद द सेशन फर्स्ट। All right. ओके, थैंक यू। Another thing that you need to focus is you can have a report directly generated from the software. I basically trade mostly in the options, so my data may reflect some data of options as well. But अगर आपको ऐसा कोई ट्रेड मिल जाता है, I repeat, अगर आपको ऐसा कोई ट्रेड मिल जाता है तो कभी भी नहीं छोड़ना है। Now what kind of a trade that I am talking about? जैसे इंट्राडे पाइवोट्स होते हैं, the way that we have a intraday pivots, we also have a daily pivots, which are calculated based on my previous week data. Whenever you are able to see that on the very first day, Monday, Nifty is closing or any underlying asset is closing above your weekly pivot, you should go long on that. कैसे? यहां पर अगर आप चेक करोगे तो हमें पाइवोट वैल्यूज मिलती है। तो ये जो हमारी पाइवोट वैल्यूज होती है, ये पाइवोट वैल्यूज के बेस पर आप ट्रेड ले सकते हो। I repeat, you can take a trade on the basis of your previous week pivot data as well. This can be generated by reports in the software. See this. यहां पर हमें here we can see that underlying BDL का स्टॉक है, अंडरलाइंग ओपन हुआ पाइवोट के नीचे और पाइवोट को क्रॉस कर गया। Now this stock is having very small ATR, right? हमारा ATR इसका कितना है? करीब 4 पॉइंट का। अब अगर 4 पॉइंट के लिए if I want to take a trade, 4 पॉइंट के लिए if I want to take a trade, what I have to do is I have to focus on my values strictly. यहाँ पर here if you are able to see my basic movement or high low का difference is about 2 points, right? That means 50% is already covered. So in this case, if at all I am taking a risk, if at all I am taking a trade, what I have to do is, if I am buying this stock over here for intraday trading 146.20, then I have to keep a smallest possible stop loss. Why? That is because my R1 was nearby and previous day high was also nearby. So in such a case, even if you are buying over here, your stop loss should be smallest possible value as per the structure, and here it should be 146.20 was my closing. I am assuming that I am going to buy at this value, and
if the stop loss I am supposed to keep is 1 rupee only. Why? Because 4 rupees ATR, out of that 2 rupees is already moved, then I need to keep minimum stop loss of only 1 rupees. And once I am able to see that previous day high and R1 is nearby, I should exit immediately, or that should be my target, because I am already taking a risk in a smaller stock having a small ATR value. Is this clear to you all? See, this is another beauty. Even here, even you are not supposed to have pivots का value. यहाँ पर आपको pivots की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ बेसिक जनरल नॉलेज लगाइए. प्रीवियस डे टाइट रेंज में स्टॉक घूमा था, ये रेड लाइन जो है वो मेरे प्रीवियस डे का लो है, मतलब पिछले 2 दिन से मेरा लो सेम बन रहा है करीब करीब. और आज ये 15 मिनट्स का मारुति का चार्ट है, जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट्स में प्रीवियस डे के हाई के ऊपर VWAP के ऊपर हमारा अगर क्लोजिंग मिल रहा है, तो इन सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल मीनिंग, ये एक्सपांशन का केस है. आई रिपीट, ये एक्सपांशन का केस है. तो यहां पर आपको अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करना चाहिए, और आपको सबसे पहले कूद कर, कहने का मतलब अग्रेसिव बाय कर सकते हो with the smallest possible stop loss. How? Here my value at the closing is 7095. My VWAP value is 7068. Then approximate stop loss that I should take is few points below my VWAP. 7095 is my entry value. My stop loss will be 7064. I am taking bit smaller value. All right, and then you can enjoy the ride. In this case, in the simpler way, if you want to take a trade, take a help of Heikin-Ashi candles. Why? Because it reduces my whipsaws, and by reducing the whipsaws, you can enjoy the trend. Here you can see 2 red candle, 1 red candle, 1 red candle, but here continuous good green candles. हमें यहां पर देखने को मिला था कि मारुति का स्टॉक पिछले दिन के हाई के ऊपर खुला, आसपास खुला, और ऊपर बंद हो रहा है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर. तो यहां पर हमारा रेंज एक्सपांशन हो सकता है. तो प्रीवियस डे का जो कंसोलिडेशन था वो आज ब्रेकआउट का मूव दे सकता है. सो यहां पर हम लोगों को एटीआर टीआर का कुछ कैलकुलेशन भी नहीं करना है, सिर्फ राइड को एंजॉय करना है. जब ऐसा केस मिल जाता है, Heikin-Ashi कैंडल्स यूज कीजिए, जिससे आपका फायदा ये होगा कि छोटी छोटी रेड कैंडल्स जो मिलती है वो इग्नोर हो जाएगी, और आप ट्रेंड को पूरा का पूरा एंजॉय कर सकते हो. वंस यू आर एबल टू सी कि ऐसी कोई रेड कैंडल बनी तो एग्जिट ले लीजिए. बट स्टिल अगर यहां पर एंट्री हो रही है 7095, एंड इफ यू आर एग्जिटिंग एट 7197, that means easy 100 points, right? With the help of Heikin-Ashi and VWAP only, not even pivots. Only data I have considered is my previous day high. Is that clear? नितेश जी क्वेश्चंस ले लीजिए, कोई बात नहीं. If anyone wants to take any stock of their choice, we'll discuss that. नितेश जी? Yes, yes, 1 second. VWAP strategy works very good when you get open is equal to high, or else open is equal to low, and that data you can get easily from software as well.
आपको यहां से वो डेटा मिल जाएगा whenever you go for a open is equal to high or open is equal to low. By this way, आज बायोकॉन में एक्सटेंडेड मूव था, सी पाइवोट के ऊपर खुला, वीवेप के नीचे क्लोज हुई थी कैंडल, बट दिस वाज एन एक्सपांशन केस, क्योंकि हम लोग कल के हाई के आसपास ही फर्स्ट कैंडल उससे ऊपर क्लोज हुई थी. एनी क्वेश्चंस यू हैव? Yes, sir. There is one question like how to calculate ATR range. ATR range is already available in your software, right? For an example, let us open a fresh chart. Right, I'm going for some different set of stocks. For an example, if I go with HDFC, right, average true range, system gives you a direct calculation of that, and by that way round you can expect average true range is nothing else but the expected points move that we can see in my underlying asset for a intraday trading purpose. ATR और कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेड कितने पॉइंट्स घूम सकता है हमारा स्टॉक या इंडेक्स आज के इंट्राडे में. हम लोगों ने वो एग्जांपल भी देखे जब हमें एक्सटेंडेड ATR मिल रहा था. पॉसिबल है, बट एक्सटेंडेड ATR का सिंपल लॉजिक आपको ये लगाना है कि शुरुआत की कुछ कैंडलों में या फिर प्रेफरेबली ओपनिंग, अगर आपको ATR कंप्लीट करता हुआ मिल रहा है लेकिन ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, देन एंजॉय द ट्रेड, देन एंजॉय द ट्रेड. फॉर एन एग्जाम्पल, इन्फोसिस अभी कुछ टाइम पहले गैप डाउन ओपन हुआ था, राइट? एक गैप डाउन ओपन होने के बावजूद भी अगर आप ध्यान से चेक करोगे, your open and high was same. Still, if momentum is continue and you can see your candles are closing below VWAP, you can still enter into a trade on the short side. आप फिर भी शॉर्ट साइड में ट्रेड कर सकते हो. इट ऑल अबाउट आपको ये देखना है कि VWAP से कितना आसपास में या कितना ऊपर क्लोज हो रहा है या कितना नीचे क्लोज हो रहा है आपका कैंडल. Your candle should give a convincing move with a VWAP crossover on the either side. Pivot is just a midpoint. Pivot आपका midpoint का काम करता है. अब वहां से बुल्स को कैरी करना है या बियर्स को कैरी करना है, वो हमारे हाथ में नहीं है. वो बुल्स और बियर्स देखेंगे. हमें तो सिर्फ इतना ही देखना है, अगर बुल्स पावरफुल हैं तो हम लोग भी बाय करेंगे, अगर बियर्स पावरफुल है तो हम लोग भी सेल करेंगे. देखिए एग्जांपल आज दूसरा LNT. व्हाट There is one हैपेंड? more question like VWAP में कितना दिन का एवरेज लेना चाहिए? VWAP में एवरेज नहीं होता है. VWAP गिव्स यू एवरी सिंगल ट्रेड वैल्यू. हम लोग एक काम करते हैं, VWAP आपको मैं एक्सेल पर कैलकुलेट करके बता देता हूं VWAP कैसे कैलकुलेट होता है. हमें VWAP के लिए कोई इनपुट नहीं होता. बाकी एवरी इंडिकेटर और एवरी ऑसिलेटर हैज गॉट सम इनपुट. वी कैन चेंज इट एज पर आवर रिक्वायरमेंट, बट VWAP का कोई इनपुट नहीं होता है. VWAP is considered with every single trade that is taking place. VWAP आपका हर रोज का जो ट्रेड हो रहा है, एवरी सिंगल ट्रेड, एक शेयर भी अगर ट्रेड होता है तो वो भी VWAP की वैल्यू में चेंज ला सकता है. एक शेयर हो या 1000 शेयर हो, अगर आपको सिस्टम में वो ट्रेड पड़ता हुआ दिखा तो ऑटोमेटिकली आपको वो VWAP में कंसिडर हो जाएगा. सी दिस एग्जांपल, हम लोग पाइवोट से नीचे खुले, क्रॉस करने की कोशिश किया लेकिन क्रॉस नहीं कर पाए. फिर ये जो रेड लाइन है वो हमारा प्रीवियस डे का लो है. अब उसके नीचे अगर हमारी
प्राइसेस चल रही है, VWAP के हिसाब से सेल बन रहा है, देन एंजॉय द ट्रेंड। फिर जब तक आपको नहीं लगता है, आप चाहो तो S1 पे, S3 पे, S4 पे निकल सकते हो। एक्सट्रीम केस पर अगर आपको ये मूव को एंजॉय करना है, हाइंकियाशी कैंडल ले लीजिए। हाइंकियाशी कैंडल से आपका ट्रेंड एंड तक क्लियर रहेगा, और जब ऑपोजिट कैंडल बन जाए एग्जिट कर लीजिए। अभी सेल में है तो हम लोग रेड कैंडल देखेंगे, जब ग्रीन देखना है यानी कि बाई साइड होते हैं तो ऑपोजिट, जो हमने मारुति के केस में चेक किया। आपको यह समझना है कि अगर 2-3 दिन से कंसोलिडेशन होता है तो आपका एटीआर एक्सटेंशन भी हो सकता है। नॉर्मल केसेस में एटीआर एक्सटेंशन नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभार प्राइसेस अगर बहुत टाइट रेंज में घूम रही है और बाद में सडन कोई मूवमेंट आता है, तो आपका उस दिन में एटीआर के बियॉन्ड मूवमेंट भी आती है। You can see movement beyond your ATR as well. Let us try to understand how our prices are considered for calculation of VWAP. Here I will consider price, and here I will consider the shares traded. I am just taking a random example. मैं सिर्फ एक examples ले रहा हूं, ये actual trading में शायद ना भी हो, ठीक है। प्राइस मैंने एग्जाम्पल यहां पर लिया 11,020 रुपीज, और शेयर्स दैट गॉट ट्रेडेड इज, फर्स्ट ट्रेड ही था, इट वाज अ फर्स्ट ट्रेड, सो 2500 शेयर्स, देन 11023, and shares that got traded is 1500. Third trade was 11,021, shares that got traded was something like 1800, then 11018, shares those got traded is 1100. Again another trade took place at 1115, and shares that got traded was something like 800. सॉफ्टवेयर होता है तो हमें ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगा। हियर आई एम सपोज टू फाइंड आउट VWAP, तो VWAP हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, this value divided by this value. All right. If I am changing it, for an example, number of shares, if I am changing it, it will also reflect a change in my VWAP value. This is how your VWAP is calculated. Other than this, nothing more maths is required. But even हमें ये भी करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिकली देता है VWAP का वैल्यू। Any more question that we have? Yeah, one more question is there. Can you please explain how can we use VWAP with Nifty futures and Bank Nifty future option trading? Option trading is having a, frankly speaking, VWAP can be used for option trading, but last 2-3 days, not 2-3 days, but frankly speaking 2 days, yesterday and today, it was not a good day to trade for option buyers. But let us try that as well. We'll go for a Nifty first. This example I think so we have already discussed, if I am not wrong. राइट, हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि पाइवोट का सपोर्ट ले रहा था, बाद में ऊपर गया, लेकिन आज की दिक्कत ये थी कि प्राइसेस वेयर सो टाइट रेंज, इसमें लॉजिकली फ्यूचर में ट्रेड करना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट स्टिल कल का एग्जांपल में अगर लेने की कोशिश करूं, हियर दिस ग्रीन लाइन सजेस्ट माय प्रीवियस डे हाई,
This is good candle, sorry, this is doji candle, this is doji candle, this is also a doji candle. That means first 45 minutes till 10 p.m. prices moved in the tight range. But the good part was it was above my previous day's high. But the problem was candles. Why? Because candles are not good green convincing candles. All are doji candles. So in this case, if at all I wanted to take a trade, हम लोग यहाँ पर लॉन्ग नहीं कर सकते थे, शॉर्ट नहीं कर सकते थे ये 3 दिन में, लेकिन यहाँ पर ये तीसरी नहीं चौथी कैंडल पर हम लोग शॉर्ट कर सकते थे. Value is 12102. Fourth candle closing value is 12,102. I can enter into a short side trade. My stop loss should be candles high and 1 or 2 point more. Then I can see that prices made a low till 75. My rough 1:1 risk reward was done. If at all I am a disciplined trader and have traded in a multiple lots, I should have exited 50% at least, right? Rest 50% I should trail my stop loss, which got triggered over here. Now again shorting come into the picture. Why? Because again previous day high was cleared by one candle, but again weakness can be seen. Then again I can enter into a trade not on the basis of VWAP, but I can see that previous day high is indirectly acting as a hurdle, but is giving a greed. ये हमें लालच दे रहा है लॉन्ग साइड ट्रेड करने का. थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है. सो प्रीवियस डे का हाई वो रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन उसके बाद में एसएल ट्रिगर भी करवा रहा है शॉर्ट साइड के ट्रेडर्स का. बट देन वंस वी आर एबल टू सी द रेड कैंडल्स, हम लोग यहां पर शॉर्ट कर सकते थे. दिस वाज फॉर अ निफ्टी फ्यूचर. This is my bank nifty future. Bank nifty future, if I am able to see, previous day ka high is acting as a support, and then near to 2:45 पौने 2 बजे एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, लेकिन उस टाइम पर शॉर्ट करने का सेंस नहीं बनता है. वाई? दिन खत्म होने आया. अगर अब तक इंट्राडे ट्रेड नहीं मिला तो 45 मिनट्स में फिर जबरदस्ती का ट्रेड लेने का सेंस नहीं बनता है. इस कैंडल के बेसिस पर अगर ये कैंडल पहले मिलती तो हम ट्रेड करते, लेकिन इस कैंडल के बेसिस पर ट्रेड नहीं करना है. सेम थिंग यहां पर देखो, कल का जो हाई है उसके आसपास ही हम लोग घूम रहे हैं. आज बहुत टाइट रेंज थी, कुछ मूवमेंट ही नहीं था, सो आज इसमें कुछ ट्रेड पॉसिबल ही नहीं था. बट 2-3 दिन पहले जो मंडे का जो ट्रेंडिंग मूव आया था उसमें ये चेक कीजिए, यहां पर हमारा प्रीवियस डे लो है. प्रीवियस डे का लो आज रिस्पेक्ट कर गया. फर्स्ट ही कैंडल वीवैप को क्लियर भी कर दिया. अब सेकंड कैंडल ने भी क्लियर कर दिया. व्हाट आई कैन डू? आई कैन एंटर इनटू अ ट्रेड ओवर हियर. माय क्लोजिंग वैल्यू इज 31,200 approximate, and I can take a stop loss of 50 points. Why? Because the beauty of this candle I can see is open and low is same. Open and low is same. My VWAP value is in between that. I can keep a stop loss below my opening value, that is 31,155. Below that I'll keep some SL and I will enjoy the ride. What should be my first target? Near to my previous day high. But if that is getting cleared, let us enjoy some more upside move and have some good gains. I think this is clear for Nifty Bank Nifty future. Any other question that we have? Yes, sir. There is one question. Is Abhishek is asking, sir, what is the value of VWAP? In which this case? In this case, when I said that I am going to go I think long, it's a my previous VWAP one. value Previous was, one. I really asked sorry? question when you was explaining about VWAP, na. So he Huh? asked this question. What is the value of VWAP? VWAP value, I was trying to make this explain on an Excel that how VWAP is basically calculated by our system. And in this case for Bank Nifty future, after first candle of 15 minutes when this got completed, my candle closing was at 31,159.95.
VWAP value was 31,137. Again VWAP inched positive. Why? Previous value was 31,137. Next value is 31,170. That means VWAP is inching higher. I can have a good gains. Why? Because on the very first day of the week, previous sessions low is respected and my VWAP is giving me a signal to buy, plus I am sustaining above a psychological level of 31,000. That itself gives me a hint that we can have a good up move. I think so I have answered what was asked to me. What was the VWAP value that was asked? I think so I have showed that. There is one more question, sir. What is Yeah. the VWAP parameters? Does the size of the Heikenshi? We need not to consider VWAP because VWAP as a whole don't have any parameters. VWAP में कोई value input नहीं होती है. Even if I try to show you in this system, it is known as a tick average. कोई value ही नहीं मिलेगा आपको. VWAP का कोई input change नहीं करना होता है. VWAP default लेना है. VWAP is the only indicator, frankly speaking, which gives you a indication right from the first trade. बाकी कोई भी मूविंग एवरेज ले लोगे आप, वो आपको प्रीवियस कैंडल्स का डेटा लेगा ही लेगा. कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, इसमें अगर मैं 1 मिनट का चार्ट भी लूंगा तो 1 मिनट में भी जो फर्स्ट ट्रेड हुआ होगा ना ओपनिंग, VWAP उसको भी कंसिडर करता है. मतलब VWAP मोस्टली आपको यूज करना चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग में, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर रिस्क प्रोफाइल एंड योर ट्रेडिंग पैटर्न. आप VWAP को किस तरह से यूज करते हो. काफी लोग VWAP को अलग अलग तरह से यूज करते हैं, एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस द केस में भी. सबकी अपनी अपनी चॉइस है. There is one more question, sir. Sure. How can we use end of day option data to select probably stocks for the good intraday trading next day? Frankly speaking, options in a stock options, due to physical settlement in this week, trading is a bit difficult. But what you can do is you can enter into a buying side trade once you are able to see that stock is near to support. For an example, if I try to say 2-3 days back, this stock made a low of 7,000 here. Yes, on Friday, if I am not wrong, Maruti made a low of 7,000. Highest OI data was also at 7,000 on a put front on that day. Still, let me try to show that thing up for you. On that day, still data is going to take a change, but then also highest OI was at 7,000 and underlying, that is Maruti made a low of 7,000. Highest OI was also at that point, and from then stock bounced more than 200-300 points. Highest OI Friday के दिन भी value change थी. I repeat, value was changed, but still that acted as a support, and we can see on Monday stock bounced with a beautiful VWAP consideration trade that we have already discussed. Further, frankly speaking, stock options requires a good study and data understanding, which will be a bit difficult for me to explain in 2-5 minutes. It requires a good practice and good experience on the chart and knowledge level as well. For an example, ICICI, if I talk about, ICICI was not clearing my 300 mark on a daily charts. This was my 510 made in the mid of the month and closing near to 500. But yesterday this closed above 500. So if I tell you that go for a 500 call writing blindly, it will be a bit risky, right? Yesterday some news flow was also there in this stock. So many a times news flow
can have an adverse impact on your trading. So please trade with some caution. Next question, please. We have to trade if the candle open price is above VWAP. Above VWAP will not be possible immediately at the first go, but you need to see that at least first 15 minutes if you are having a good green or red candle and VWAP is also giving you a signal to buy or sell. For an example, what we discussed for Nifty in this example only, here, see this, yesterday we were near to previous day high, near to VWAP, but trading was not convincingly to go high, to go long. So it makes no sense to take a trade. As long as you are able to see that doji candles are there, why should go and jump for a trade? Not required. I'll show you another example today. See this. No good candle. No good candle. But once your stock is closing convincing below your VWAP value, you can enter into a short with a small stop loss. Ultimate thing that you need to control is your risk. Reward will come automatically. See, here even VWAP is getting cleared, but pivot indirectly acted as a resistance. So you need to understand pivot and VWAP relation as well. Here, red candle but near to pivot, green candle near to pivot, then two doji candles, again red candle, again doji candle. Then with this red candle, we can see that probably some fall is going to come. Why? Because my Hanki Ashi also reflects some weakness and that is followed. You can keep some minimum small stop loss, 1 rupee, 1.5 rupees as per the structure, and you can enjoy the trade. Next question, please. This is I think almost all questions are answered from your side. All right. I think, yeah, it's main questions are completed. No more. All right, fine. Thank you Okay. very Yeah. much. Sorry. Yes, yes. Continue, sir. All right. Thank you very much to all for spending some time for learning. My name is Manush Vadher. You can follow me on social media with the name Nifty 50 Striker. Thank you all. Thank you, Spider people, for giving me opportunity to share my experience with traders. Thank you all.